understand their problem, and they have made me realize over the years that I should be focused more on the youth mental health and create a difference. So, as you can see, my topic is youth mental health and drug abuse in Pakistan. And please, next slide. So there is some data where I would like to talk about why youth mental health is a priority and why it is a priority of Pakistan Health Department. Currently, over 64% of Pakistan population is under 30, and this trend is going to continue at least till 2050. And in 2022, Pakistan is currently the sixth most populous country globally, and two-thirds of the population is below the age of 30. And if in my next slide, I'm going to talk about what age we consider is youth. You can say that Pakistan is among the world's most youngest nation, where we have the most young people, and 50% of the psychiatric disorders starts before the age of 20 years. So that's one of the reasons that youth mental health is very important, because prevention is better than cure. And 1 in 4 youth is suffering from the mental health issues in Pakistan. This is WHO's report, because we lack our local data, so we have these figures. So I think suicide is the 4th leading cause of the death among 15 to 29 years old people, and 13 to 14% of the global burden of the health is in this age group. Next. So what is youth? So when I was just trying to make this slide, so I had little difficulty. So what I got to know the 3 definitions. The one is according to United Nations, they say that there is no universal definition of youth, but somehow they made a consensus that 15, from the ages of 15 and 24 years, they have labeled it as youth. But culturally and I think emotionally, it's how we feel at our age. Or मुझे कहते हैं कि if your heart is young, so you are young forever. So I personally believe on that too, and my personal belief is that age is a number. So next. And yes, as a scientific definition, middle age की जो है उसमें ये है कि अगर आपकी एज 40 से 60 के बीच में है तो आप मिडिल एज में आते हैं. तो I would say कि 40 से कम जितने भी लोग हैं below 39, they are all considered youth. So what is mental health in youth? As it is very similar to the definition of health that Dr. Aftab has already described according to WHO. It includes emotional well-being, psychological well-being, and social well-being, and involves being able to navigate successfully to the complexities of life, and fulfilling relationship, adapting to changes, utilize appropriate coping mechanism, and well-being without discrimination. So common mental health problem that we see in Pakistan are stress-related disorder. I get a lot of students during exams that they cannot deal with the exam stress. Most commonly anxiety disorder, depression is very common. Even depression and anxiety before we used to see the people, the youth maybe in the teenagers like 15, 16 years of age, but surprisingly it has becoming more and more in the pediatric group too. The youngest child that I have seen with the symptom of depression was 4-year-old. So suicide is very common, and it's a very interesting fact. Before we used to relate that suicide is associated with mental health disorder. I remember in 2017 I went to Seoul, and there was a very renowned professor who is working in suicide. He has we attended a workshop where he used to say that suicide is not just an associated symptom of mental disorder, it itself is a mental disorder. The people who attempt suicide, the idea is that a lot of people who are suffering from mental health issues like depression, anxiety, not everybody commits suicide. So people who commit suicide, it's already there are some kind of changes in their brain that they move towards that, and it's exactly the same phenomena that we see in the drugs too. And substance misuse is very, very common, and it's very alarming situation. Pakistan में बहुत alarming है. Eating disorders are very common.
Because of the social media influence, I see a lot of patients who just want to have that standards of being thin and like models and the beauty. So a lot of problems in this area. Behavioral issues and personality disorders are, I think, on the silent rise too. And another problem that I haven't mentioned over here that I deal with, I think almost every young kid or every young person who is coming to me, it's most common the identity crisis disorder. They don't know who they are because of the disparity between our culture, our religion, social media influence, difference between their parenting and when they go to school and the problems they deal over there. So identity crisis, who they are, who they want to be, what is their role, how can they move forward. And it's a great problem that I see every day. And another problem that I haven't mentioned over there, and I really want कि इस पे हम ज़्यादा काम करें. There's a huge gap between parents and their children. Children cannot talk to their parents about the problems they are dealing with. Sadly, they are not dealing with the problem that we used to deal as a kid. Their problems are bigger, their problems are dangerous, and they cannot even talk about it. And the parents, somehow they are in denial, sometimes denial. They think जैसे हमारा बचपन था, जैसे हम होते थे, ये बड़ी एक कॉमन सी बात है. मेरा ख्याल आप सब लोगों ने सुनी हुई, हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में. और अभी भी मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मेरा जो सबसे बड़ा डायलेमा है, मैं आपको ये बताऊं, हमारी एक एथिक्स में ये है कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज पेशेंट्स इंफॉर्मेशन इफ जर्नली. बट अगर अंडर 18 है तो उनके पेरेंट्स को हम ये इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर कोई रिस्क है, कोई सुसाइड का इशू है या कोई प्रॉब्लम है. बट द डायलेमा यहाँ पे ये होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा दे आर सो अफ्रेड, दे रिक्वेस्ट मी प्लीज डोंट टेल दिस टू माय पेरेंट्स इवन इफ दे आर सुसाइडल, इवन इफ दे आर इनटू ड्रग्स. मेरा डायलेमा यहाँ पे स्टार्ट होता है इफ आई डिस्क्लोज इट टू माय पेरेंट्स एंड द वे द पेरेंट्स बिहेव, they like then there is a problem that they will not bring their child to me anymore and the child will not even speak to me because he will lose his trust on me. और दूसरी तरफ ये डायलेमा आता है अगर मैं पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं देती तो देन द डैमेज विल बी बिगर. और जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि इवन अगर मैं पेरेंट्स को बताने की कोशिश भी करती हूँ तो वो उस डिनायल से बाहर नहीं आते और कहते नहीं हमारा बच्चा ड्रग नहीं करता, उसके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, उसका पोर्नोग्राफी एक्सपोजर नहीं है. आई थिंक पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है एंड पेरेंट्स रियली नीड्स टू गेट सेंसिटाइज्ड विद टुडेज इश्यूज. सो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है जो कि चाइल्डहुड में आप सब लोगों ने इसके बारे में बार बार सुना होगा. Yes, I am rostrophobic, but I was told कि मैं उस सामने move नहीं कर सकता and I don't have that headgear या वो hand mic, so I have to stay behind and try to overcome my anxiety as well. So it's a practical example of overcoming your mental health problems. So here it is, it is a research. 2015 when I was part of Ipsos. Ipsos is world's leading market research company and I left it. That was my last job. और आज तकरीबन 7-8 बरस के बाद as I mentioned it on my LinkedIn as well, कि I'm at the intersection of my two very passionate career pursuits. One is research and the other is mental health, being a mental health practitioner. So should we move on? We all know what is economic induced stress. इकोनॉमिक इंड्यूस्ड स्ट्रेस वो होता है जब आप एटीएम यूज करते हैं उसके बाद जो पर्ची निकलती है उस वक्त जब आप उस पर्ची को देखते हैं तो जो कैफियत आप महसूस कर रहे होते हैं दैट इज एक्चुअली द इकोनॉमिक इंड्यूस्ड स्ट्रेस, एटलीस्ट फॉर मी. So we are as very capable economists we have got in our panel mentioned that it is a global inflationary burden which we as global citizens are going through. What do we have over here in this dipstick study? I would like to share it with you. Economic factors, they include unemployment, inflation, difficulty to access the routine purchases. All these things constitute economic factors which induce mental health issues. Let's see what are they. This research was conducted across Karachi, Quetta, Lahore, Rawalpindi, Islamabad, Peshawar, Muzaffarabad, and Gilgit. So, sort of provincial representation has been ensured.
though they are mostly provincial headquarters. The study targeted diverse demographic, including males, 60% males, 40% females. Not that we are gender biased, it was just the snowballing method जो हमने deploy किया, इसलिए whatever we could have come up with, but again extrapolation एक process होता है जिसमें हम representation को normalize कर लेते हैं. From different socio-economic classes, ये बहुत अहम चीज़ है, मैं चाहूँगा, I would like to have a word on it. आपके ख्याल में सोशियो इकोनॉमिक क्लास का सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या होता है? If I am a person from an upper socio-economic class and somebody is even more upper socio-economic class, what will be the chief indicator of our socio-economic class called SEC in acronym? क्या चीज इंडिकेट करती है हमारी सोशियो-इकोनॉमिक क्लास को? कॉमन सेंस आंसर आई नीड. भाई कोई एक चीज बताइए ना जिससे पता चले अपर क्लास है लोअर क्लास है. What's that? मोबाइल, गाड़ी, इनकम, लेट मी से. हाँ, अच्छा, मजे की बात यह है कि सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो हमारे रिसर्च की दुनिया में इस्तेमाल होती है, इट डज नॉट हैव मनी एज अ फैक्टर, be it in form of any material possession. It is constituted of occupation and education, because we do believe that the lifestyle preferences and choices are not primarily driven by the money you have. Right? It is the mental economic class coupled with socio-economic class which result into the choices we make. And there's where behavioral economics or neuroeconomics come into play. Target participants were, as I mentioned, there were 3,000 individuals who were surveyed and aged from 20 to 60. You can see the figures representing TPS स्केल है, proportion to population size, जो हमने इसके अंदर यूज किया. यू कैन सी, जैसे सर ने कहा कि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो है वो तरनौल से आगे से शुरू होता है और माडला तक और इधर फैजाबाद तक खत्म हो जाते हैं. हम जैसे DH डेवलपर भी इस्लामाबाद की मुज़ाफात समझे जाते हैं. सो उसमें थोड़ा सा साइज ज्यादा है क्योंकि स्नोबॉलिंग की, रेस्ट इट इज proportion to population size. SEC A, B and C. अभी याद रखिएगा, हमारे जो मीन्स टू एक्सेस द रिस्पोंडेंट थे उन्होंने हमें कन्फाइन किया कि हम SEC D और E तक एक्सेस नहीं कर सके. दैट इज लिमिटेशन ऑफ दिस स्टडी. दे माइट बी अंडरगोइंग मोर इकोनॉमिक स्ट्रेन, राइट? सो मूविंग ऑन, methodology, snowballing होती है. We reached out to them through our in-person interaction. Pen and paper interview कहलाया जाता है. We have questionnaire, and part of this survey was also done through online access to the participants. Move on. I mentioned it. Go on. Okay, कुछ methodical aspects. इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस होती है. 10% जो हमारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रीचेक होते हैं, री एंटर होते हैं. सुपरवाइजरी कंट्रोल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस वर फॉलोड एज रिटन इन textbook, and we are very much confident that this sample of 3,000 is not only representative of Pakistan, but the reliability and validity aspects of our research methods, they are intact as well. Move on. Findings. Okay, what we have got? Economic conditions in Pakistan. Around 67% strongly agreed, and 26% agree that we are undergoing extreme economic pressure and detrimental, depleting economic conditions in Pakistan. It was the degree of agreement on the part of our participants. Move on. Link between economic conditions and financial well-being. देखिए, अभी हमने बात की कि maybe 5, 7, 10% of upper socio-economic class, A1 and A2 socio-economic class, महंगाई तो उनको भी नजर आ रही है, लेकिन ये महंगाई क्या ट्रांसलेट हो रही है उनकी फाइनेंशियल इल बीइंग में या उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेन में? शायद नहीं. राइट? सो व्हेन वी पुट अप दिस क्वेश्चन, सो अराउंड, सॉरी मेरा एंगल थोड़ा सा है, यू मे हेल्प मी, अराउंड 49% people agreed, strongly agreed, and 37% people
individuals agreed that yes, there is a strong link between their financial well-being and prevailing economic conditions of the country. Moving on, anxiety related to economic concern. Acha, ye perceived anxiety hai. Obviously, it is not clinically tested, scaled, or measured degree of anxiety, but our question was phrased in a way that do you feel anxious, or does the current economic condition concerns add to your anxiety? And look at this staggering agreement with these things that around 39 plus 52% people agreed that yes, the current economic condition is resulting into their anxiety. Impact of financial worries on sleep quality. सिर्फ नाकाम मोहब्बत के नतीजे में रत जगे हुआ करते थे। आज से उस जमाने में जो जिनकी नज़म सुना रहे थे डॉक्टर साहब, खैर हमारी दोस्त के कहने की कामयाब मोहब्बत भी रत जगों में बदल सकती है, but the modus operandi is different. But over here we are talking about sleep hygiene being affected by the economic condition. It might be entering into the periphery of insomnia, but at least sleep quality, sleep hygiene is being affected as being agreed by 57% people strongly agreeing to the fact, and 39%, am I reading it right, people agreed that yes, their sleeplessness is also being caused by the economic concern and conditions they experience. Feeling of depression and hopelessness, dejection, despair, obviously that is a result, as Dr. Saab mentioned, that there is a positive correlation, and over here around 89%, 10 में से 9 लोग express करते हैं अपना agreement कि depression or hopelessness regarding Pakistan's economic situation is there, with 52% strongly agreeing and 37% agreeing. Within these, 89% people being in agreement with this proposition that they are likely to experience hopelessness and depression in wake of current prevailing economic conditions. Professional assistance for seeking mental health implications of economic crisis. Acha, yahan I was a little happy. Why was I happy? Only thing which I could be happy about this research. वो ये था कि एक अच्छा reasonable number, because what number, Pakistan is the least documented economy in general, and when it comes to mental health economy, we don't have any indigenous figures per se. यहाँ हम इस स्टडी में ये देख रहे हैं कि 43% लोगों ने कहा, approximately 35% of population sought professional assistance. So 10 में से 4 अफराद ने कहा कि जी हमें कोई ना कोई मिल गया अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए. अब ये किस चीज को प्रोफेशनल हेल्प कह रहे हैं? Maybe talking to a vent buddy, maybe talking to a teacher, maybe talking to your spouse, or an elder brother who is a better financial manager. Maybe they have attributed that talking as well to the professional help they sought in this process. But still, Dr. Salma will vindicate this fact that when we terminate our therapy, we actually create a social support system which works as a de facto therapeutic support, right? So if you have got 20, fine. But still you can see that around half, a little less than half of the population doesn't know whom to contact, whom to talk about, whom to seek help from for their mental health conditions. Move on. Sport to handle the USA. Our father himself is a doctor over there and spent his life over there. He was about to retire, and parents brought me that lady in her early 40s, and the case was that she was living in Dubai, parents were living in America, and there was something that happened that they could not pick it up. कि जी मैंने तो अपना बिजनेस करना है, मैंने तो दुबई जाना है. दुबई आके उसके symptoms और aggravate हुए. She went into a manic episode. She bought a ticket, went to South Africa, and you can understand a lady suffering from manic episode, what can harm she can have on herself.
used all the drugs. अभी डॉक्टर सुहाल बात कर रही थी, तो she was using all the drugs that you can imagine, and she was disinhibited. She was having multiple partners. How painful for parents could be. उसने तो कहा कि मैंने रिजाइन कर दिया. डॉक्टर साहब रिजाइन फ्रॉम अमेरिका, came over here. उन्होंने किसी तरीके से पता नहीं कैसे साउथ अफ्रीका से उनको लेकर आए और यहाँ लाकर उन्होंने दाखिल किया और उसको फिर ट्रीट किया. लेकिन ये है कि उसका इम्पैक्ट बात कर रहे थे कि बर्डन कितना है. इट्स नॉट बर्डन ओनली ऑन दैट इंडिविजुअल, द होल फैमिली सफर्स. एंड दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वेरी फेमस रिसर्च which was carried out by Murray and Lopez in 1969 on global burden. After that, this global burden of disease that has developed the idea. It's not only the physical illness, it's not only the physical pain, it's all that disability that happens because of invisible illnesses also. So they did for Delhi's disability adjusted life years or years lived in early death. इसको एक statistical formula से उन्होंने किया और डॉक्टर आफ्ताब ने बताया कि जी इसके मुताबिक फिर पता चला कि वो इलनेसेस पहले जो बजट होता था सारा वो मोर्टेलिटी वाली इलनेसेस में चला जाता था, डिसेबिलिटीज वाली नहीं. तो जो एक बंदा डिप्रेशन में है, जो एक बंदा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, जो बंदा ड्रग्स में है, जिसकी कोई पर्सनैलिटी के इश्यूज हैं, उसका बर्डन कितना उस इंडिविजुअल के ऊपर, कम्युनिटी पे और सोसाइटी पे होगा. तो ये चीज़ जो है ना उस आइडिया से फिर पता चला. फिर एवरी ईयर WHO पब्लिशेस ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज. तो उसमें 2030 में ऐसे जैसे डॉक्टर आफ्ताब ने कहा डिप्रेशन वुड बी द हाईएस्ट बर्डन ऑफ डिजीज. अभी भी जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं 16% of global burden of disease is borne by mental disorders. तो उसका हाइट आप देखें. लेकिन इतनी इम्पोर्टेंट अगर चीज़ है तो how many psychiatrists do we have? 0.19% WHO का आपने रेफरेंस अभी दिया कि जी इतनी प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन वर्सेस जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं. और ये WHO की रिपोर्ट है, डेवलप्ड कंट्रीज भी इसमें शामिल है 0.19. तो अगर 24 करोड़ आवाम हमारी है, उसमें जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट पाकिस्तान में है दे आर लेस देन 500. यू कैन वेल इमेजिन कि लेस देन 500 इतनी आवाम है. और जो प्रेवलेंस है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की 1 in 8 person is suffering from some sort of psychiatric problem. 1 in 8. तो 1/8 of the population of और ये भी मैं जैसे डॉक्टर आफ्ताब ने कहा हमारे पास जो है ना पब्लिश डाटा नहीं है, ये भी मैं WHO के रेफरेंस से बता रहा हूँ. तो यहाँ शायद इसकी तादाद इससे भी ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमारे पास इतने हैं. लेकिन मुझे ये बड़ी हैरत तो खैर नहीं, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि वो क्या वजह है कि हम अपने उन ब्राइट बच्चों को संभाल नहीं पाते. एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड पाकिस्तानी साइकियाट्रिस्ट हु आर वर्किंग अब्रॉड आर 1400. मोर देन 1400 जो हैं वो बाहर जाके सेटल हो गए हुए हैं और पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ 500. तो आप ये देखें कि कितना बर्डन है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट दैट वी लैक एज अ नेशन टू होल्ड आवर ब्रेन्स. We are unable to give them motivation. We are unable to provide them all that they did and they got motivated to enter into this field. वो सारा कुछ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ब्लेम हम उनको उस तरह नहीं कर सकते. तो ये मुझे एक वजह फोरम मैंने जो एक्सेप्ट की इस फोरम की कि दिस इज अ होप दैट वी आर ऑल सिटिंग हियर. अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में आप लोग अपने आइडियाज देंगे तो आई एम वेरी श्योर कि उससे बहुत अच्छे आइडियाज मिलेंगे और हम ये जो अपरेंटली चीज़ें वो नज़र आ रही हैं जिसके लिए कुछ नज़र नहीं आता कि कैसे बेहतर करें तो वो ठीक होंगी. और ये जो है और जो स्टिग्मा की बात की, तो अभी कल ही एक बच्ची A levels की मेरे पास आई और उसने कहा कि जी माय फैमिली डजंट बिलीव इन साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स बट आई नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम अ साइकियाट्रिक प्रॉब्लम. And I said, you're alone. You know, my brother is here, but he is sitting in the car outside in car parking. And I said, why? You haven't brought. जी मैंने उसको ये कहा कि मैं मेरी फ्रेंड यहाँ पे दाखिल है, मैं उसको देखने के लिए आई हूँ क्योंकि अगर उसको पता चल गया, घर वालों को पता चल जाए कि वो तो मुझे मेरा सर खा जाएंगे और मेरी ट्रीटमेंट हो जाएगी. So this is how the barriers to the treatment gaps जो है ना उसके पीछे नंबर ऑफ साइकियाट्रिस्ट कम है, प्रोफेशनल्स कम हैं, स्टिग्मा इतना ज़्यादा है और अवेयरनेस की कमी है. और एक और लेडी भी अभी कुछ दिन पहले आई थी एंड ही सेड कि जी मेरा नाम तो मिस फलाना फलाना है
लेकिन लिखिएगा आपने फलाना फलाना। मैंने कहा वो क्यों? कहती जी मैं वापस जाऊंगी, गुजरात जाऊंगी, वहाँ पर गाँव में जाऊंगी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रिस्क्रिप्शन किसी के हाथ लगे और उनको पता चल जाए कि ये इस बच्ची की है, तो मेरी तो शादी नहीं हो सकती। सो ये रियलिटीज हैं जिसका हमें समझना है, और जितना हम इस तरह से आप जैसे समझदार लोगों के सामने बैठ के गुफ्तगू करेंगे तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस आएगी, हम अपने स्टिग्मा को एड्रेस करेंगे। When I was a young psychiatrist, नया नया मैं गया तो एक कमांडिंग ऑफिसर का मुझे फ़ोन आया, एक सीनियर ऑफिसर आया है, वो मुझे कहता है कि मैंने साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। यार मैंने बड़ा उसको समझाने की कोशिश की है कि यार उसके पास जाओगे तो सारी उम्र के लिए दवाइयों पे पड़ जाओगे, मत जाओ। लेकिन यार ये समझ नहीं रहा, सीनियर है, मैं रोक नहीं सका, तो सॉरी यार हमारे पास भेज दो। ये और ये डॉक्टर कह रहे हैं, तो इट्स नॉट ओनली इन द जनरल पब्लिक, वी द डॉक्टर्स आल्सो live with that myths and misconceptions about the psychiatry. तो ये वो इस तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर आगे हम चलेंगे तो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन I was just thinking that is it something that we can handle by treating psychiatric patients? I'm afraid not. So there is something that we have to do on the preventive side. प्रिवेंशन करेंगे तो हम इतने बड़े जाइंट का संभाल सकेंगे, प्रिवेंशन के बगैर नहीं, अवेयरनेस प्रिवेंशन की भी होनी चाहिए। तो there is a very famous study, adverse childhood experiences study. This was done in 1969 एक सिएटल में CDC का एक सेंटर है प्रिवेंटिव मेडिसिन का, वहाँ पर केसर परमानेंटे इंस्टीट्यूट में ये स्टडी हुई। What they were doing study on obesity. उसमें उन्होंने देखा कि ओवरवेट लोगों का के ऊपर हम स्टडी करते हैं, एंड दे फाउंड कि ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। तो दे वर थिंकिंग कि ड्रॉप आउट तब होता है जब कोई मायूस हो जाता है, उसकी ट्रीटमेंट जो है इफेक्टिव नहीं होती, तो तब ड्रॉप आउट होता है। तो दे ट्राई टू फाइंड आउट कि देखते हैं रीज़न क्या है ड्रॉप आउट का। जब उन्होंने जाके उनसे गुफ्तगू की, बात की, तो उनको बहुत हैरत इस बात की हुई कि मेजॉरिटी ऑफ देम वर हैविंग अ वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। उनका वेट लॉस हो रहा था। जब उनका वेट लॉस हो रहा था तो फिर ड्रॉप आउट की वजह क्या थी? तो उन्होंने बहुत गौर और गौर के बाद अंदाजा लगाया कि एक्चुअली जो उनका ओवरवेट था, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ लेडी हु हैड चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज एंड शी डेवलप्ड अ डिफेंस कि जी ओवरवेट होगा तो मैं इस तरह की अट्रैक्टिव नहीं होंगी, तो आई विल बी सेफ फ्रॉम दैट ट्रॉमा। तो वो जो है ना, ये एक बैलेंस था। एक तरफ वो अपने आप को वेट को कंट्रोल करना चाहती थी, दूसरी तरफ उसका वो फियर था बचपन का, और ये उसका एक तरह से डिफेंस था कि वो वहां से गायब हो। तो इस स्टडी को फिर उन्होंने और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी की यूजिंग मोर देन 70,000 पॉपुलेशन। उसमें उन्होंने क्या कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के क्या इम्पैक्ट क्या होता है, और वो एडल्ट्स के ऊपर की, और उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के मतलब अब्यूज कर लिया, जिसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज, और डिसफंक्शनल फैमिलीज, पेरेंटल डिसऑर्डर है, ड्रग अब्यूज है, उसमें उन्होंने लिया। और उसमें वो देखा कि और फिर उसकी स्केल उन्होंने बनाई कि जिसका 1 है, 2 चाइल्डहुड अब्यूज में 2 हुए, तो 2 या 2 से ज्यादा जिनके हुए, उनको ना सिर्फ ये कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स उनके बहुत ज्यादा थे, उनको फिजिकल डिसऑर्डर्स भी ज्यादा, उनकी हेल्थ इस तरह से अफेक्ट हुई। तो वो जो है ना, हमें ये ख्याल करना है, पोस्ट ये पेरिनेटल हेल्थ की बात हो रही थी, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू सी कि बच्चे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और वो जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस होता है, उसमें हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ माँ का ख्याल इसलिए नहीं करना कि उसकी सेहत तो जरूरी है, इसलिए कि उनका बॉन्ड बन रहा है मदर और चाइल्ड का, जो वो जो बॉन्ड है और जो उसकी पर्सनैलिटी बन रही है, वो सारी उम्र रहेगी उस वक्त तक। और जितना डिले करेंगे उतना इम्पैक्ट उस इंडिविजुअल के लिए खतरनाक है और उस बच्चे के लिए खतरनाक है। तो ये वो चीजें हैं जिसका हमें ये ख्याल करना है प्रिवेंटिव साइड पे हम क्या कर सकते हैं, और इसकी अवेयरनेस और ये सब बातें मेरा ख्याल है जो आगे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा तो उसमें इसको हम और एलैबोरेट करके देख सकेंगे। लेकिन एक जो मुझे भी ख्याल आ रहा था कि एक जो चैलेंज है, यहाँ चूंकि पॉलिसी मेकर्स भी बैठे हुए, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स आते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या बात है। मसलन देयर वाज अ पेशेंट जो बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज हुआ, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर था उसका, और कई सालों से था, बड़ा कॉम्पिटेंट बच्चा।
और वो अभी क्या है, उसको लिथियम नहीं मिल रही। इतनी सस्ती दवाई है लेकिन मार्केट में नहीं मिल रही। वो इसलिए नहीं मिल रही कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उसका रेट के ऊपर इख्तिलाफात हैं कि ये सस्ती दवाई है, इसके ऊपर हमारा ये बिजनेस अफेक्ट होगा, उस रेट पे अब या हम वारा नहीं खाती। फिर उसके अलावा जो है ये सोडियम वेल्प्रोएट नहीं मिल रही थी, अभी भी जो है ये क्लोमिप्रामीन नहीं मिल रही। तो ये इतनी जो कॉमन हमारी तो दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा तो होती नहीं है, उनमें से अगर इतनी दवाइयाँ अगर नहीं मिल रही, ये चंद एक नाम मैंने लिए हैं, तो हाउ कैन वी हेल्प आवर पेशेंट्स? जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, जो एडवोकेट्स हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि इन चीज़ों को ज़हन में लें एंड ट्राई टू हेल्प अस, हेल्प ऑल दोज़ हू आर इन नीड। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। In Pakistan, I will say, one of the largest, one of the biggest public health issue. It's not just a mental health or physical issue. It's a public health issue. उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि दुनिया में मेंटल हेल्थ का जो मसला है, कंप्यूटर खोलो। गोरा इसके बारे में कहता है, बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर इसके बारे में कहते हैं, when it comes to mental health, every country is a developing country. So even in the US, in the UK, the mental health problem is on the rise because of multiple factors. So it's everywhere. Most of the countries of the world, they are facing, specifically post-COVID, they are facing huge challenges, economics as well as health and others. तो मैं हमारी अपनी जो सोशल कल्चरल नॉर्म्स हैं उसको जिस तरह से हमने चेंज किया और पूरा एक नया सोशल डायनामिक्स हमारी आई, सोशल मीडिया आया और बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हुई। तो एक नज़म मैं पढ़ रहा था और मुझे बड़ी पसंद आई और आज के हवाले से बहुत पब्लिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ के हवाले से बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि मेरा ताल्लुक उसी ज़माने से है। आप में से बहुत सारे लोग यंग बैठे हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक, और शायद नदीमुल हक साहब टू यंग, मेरा ख्याल है यंग एट हार्ट, लेकिन फिर भी अगर एज देखी जाए तो इनका भी ज़माना मेरे ज़माने के साथ ही होगा। तो आपने सुनी भी होगी कि हम उस ज़माने से हैं जब इक्का दुक्का लोग सियाने होते थे, कौन आया ऑफिस में? किसी के घर में दाने होते थे, 100 तक गिनती किसी को आती थी, 1 रुपए में 16 आने होते थे। गांव में बस एक ही मस्जिद होती थी, मेल में चेक कर चुका हूँ, हर दिल में बस 4 ही खाने होते थे। झूठी कस्में शहर में थी और गांव में बस तकिए पर फूल बनाने होते थे। पीछे जो कंप्यूटर गुमराहों को राह पे लाना आसान था, गुमराहों को राह पे लाना आसान था, बस मंडेर पर दिए जलाने होते थे। एवरीथिंग वाज इजी, चल जाते थे जादू टूने और तावीज, सादा लोग और सच्चे जमाने होते थे। तो अगर आप देखें ये जो जमाना हमने गुजारा जिसके अंदर मेंटल हेल्थ वाज नॉट अ बिग प्रॉब्लम बिकॉज वी वर सोशली कनेक्टेड। नाउ एज वी आर कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया एंड मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया गिव्स यू अ वेरी fake picture of others. Most of us are so fake on social media that we hide reality and we make another negative virtue of someone and positive virtue of myself. So हमारा जो नई नस्ल है और हमारी जो ओल्ड जनरेशन है, सारे के सारे जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो जो हमारा इंटरेक्शन सोशल था वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, जो बिल्कुल सर ने उसको सही बात की नदीम साहब ने, थिंकिंग एज अ नेशन। तो जब नाजीज़म आया या स्पार्टन्स का आपने सुने होगी हिस्ट्री, स्पार्टन्स क्या करते थे, किस तरह वो पॉजिटिविटी इनकलकेट करते थे और सुपीरियर नेचर का वर्च्यू अपने लोगों को समझाते थे और कहते थे आपने रूल करना है। तो उन्होंने बहुत अलेक्जेंड्रिया वहाँ से निकल के स्पार्टा से और अलेक्जेंड्रिया से और कहाँ से ये ग्रीस जो थे लोग पूरी दुनिया पे इन्होंने हुक्मरानी की। इस तरह नाजीज़म में भी यही हुआ कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव इमेज बनाया कि हम सुपर ह्यूमन हैं और बाकी सारे मिलियंस हैं, तो आप लोग चाहोगे तो जिस मर्जी पे कब्जा कर लो। तो वो जो एक हिटलर की फिलॉसफी थी, हमारे यहाँ उलट हुआ है। पिछले 20-25 बल्कि 30 सालों से मैं समझूंगा कि कौम को इतना नेगेटिव मैसेज दिया गया है कि हम कुछ नहीं है कि वो सारे का सारा जो पूरे का पूरा माशरा है वो अपने आप को बहुत ही नेगेटिवली सोचता है, समझता है और बिल्कुल अपने आप को कुछ भी ना होने के बराबर समझता है। तो जो कॉम्प्लेक्स है नेगेटिविटी का, वो पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करती है। जब बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं और नेगेटिविटी के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाए, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी बिफोर कोविड पाकिस्तान का जो प्रेवलेंस था
एंजाइटी डिप्रेशन का माइनर मेंटल डिसऑर्डर्स का वो 24% था। अभी हमें एक नए सर्वे की जरूरत है, पोस्ट कोविड ये कम से कम डबल हुआ होगा। 24% बिफोर कोविड था। 1 in 4 person having a mental issue, minor mental disorder like anxiety, depression and stress। अभी तो ये बहुत ज्यादा है। तो आप ये देखें कि जो नेगेटिविटी है इसकी शक्ल इस तरह तैयार हो गई है कि हम एक टर्म होती है जो यूजुअली साइकियाट्रिस्ट यूज करते हैं, मैस साइकोसिस। तो वो जो मैस साइकोसिस की फीलिंग आ रही है आम लोगों में, और वो आप देखते हैं मॉब मेंटालिटी की सूरत में। कभी किसी को ठहरा के किसी का नाम लगा के उसको मार दिया, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और मुख्तलिफ जगहों पे बर्दाश्त खत्म हो जाना, और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करना, और छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़ी बड़ी फाइट्स हो जाना, ये कॉमन हो गया है हमारे यहाँ। रोड साइड पे ट्रैफिक की वायलेशन के ऊपर से शुरू होता है, और कई दफा शादी ब्याह के अंदर भी और मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स में आप देखते हैं कि कितना ज्यादा इसको वायलेंस की तरफ ले जाता है। तो वो जो एक नेगेटिव थिंकिंग है और उसका अपने आप को कमतर समझना और दुनिया से बहुत ज्यादा ये फील करना कि हमारा तो कोई लेवल नहीं है, ये हमें करवाया गया। पहले हमारे बहुत सारा एक जो सियासतदान तबका है उसके ऊपर, फिर उसके बाद प्रोफेशनल्स के ऊपर, डॉक्टर्स के ऊपर, बहुत सारे टीचर्स के ऊपर भी ऐसे ऐसे वाकयात, ऐसी चीजें क्रिएट हुई कि जहाँ पे हमारे तकरीबन हर प्रोफेशन के अंदर इस वक्त रोल मॉडल नापैद है। आप जहाँ भी देखेंगे जो इवेंट्स पिछले दिनों साइट किए गए उसमें तकरीबन हर तबके का बंदा जो है, हर तबके का, हर प्रोफेशन का आदमी, उसको इतना नेगेटिव दिखाया गया। Ultimately, everybody is thinking of others as a very negative and a mean and a sort of useless person, and that is the reason why every youth is trying to get out of this country, and that is also on the rise। मतलब आप कभी जाके चेक करें जो यूरोपियन, जो खास मेरे घर के पास जो जेरी का जो जहाँ पे वीजा सेंटर है, वहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं होती। हालांकि ये कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले ऐसा नहीं था। अभी तो इतना रश है वहाँ पे कि वो क्यूज में टाइम भी फिंगरप्रिंट्स का नहीं मिलता। वजह क्या है? एवरीबॉडी इज थिंकिंग लाइक कि जैसे हम यहाँ से निकल जाएंगे तो उस तरफ हमारी सरहद के बड़े जबरदस्त सबज बहाव हैं और हर चीज बड़ी रोजी है, और हम वहाँ जाएंगे तो वो वेलकम कर रहे होंगे हमारे लिए, फूलों के हार उठाए होंगे। और जो होता है वहाँ जाके, मैं उसके ऊपर बहस नहीं करूंगा, वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है। सो मेंटल हेल्थ के अंदर ये लेवल आ जाना कि लोग अपना घर छोड़ने पे राजी हो जाए, अपना घर बार, अपने बहन भाई, माँ बाप को छोड़ने के लिए जाने पे राजी हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेस लेवल है, कितना ज्यादा मेंटल हेल्थ का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का लेवल है। इसका हल क्या है? इसका हल मेरे ख्याल में जो हमारी डेफिनेशन बनी थी सन 2000 में WHO की, उसमें पहली बार फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का वर्ड यूज किया गया था। तो हमने रीडिफाइन किया हेल्थ को। हेल्थ वाज कंसिडर्ड एज एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सो एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी को मैंने कहा नहीं, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी इज नॉट हेल्थ। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। What is physical well-being? Physical illness नहीं है। What is mental well-being? Mental problem नहीं है। Social well-being means you are enjoying your physical and mental well-being in a social context। आप लोगों के साथ मिलना जुलना और मेल मिलाप करते हैं और नॉर्मल इंसानों की तरह अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। So this is something जो 2000 में आई, और उससे 23 साल हो चुके हैं हमने, और अभी तक हम पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से हम डिजीज कंट्रोल मोड में हैं। डिजीज हो गई, अब इसको कंट्रोल करना है। We have not started the physical well-being and mental well-being and social well-being concept। तो जो हमारा सोल्यूशन, जिस तरह मैंने कहा, सोल्यूशन अगर हमें मेंटल हेल्थ का चाहिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसी तरह की मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन शुरू करानी पड़ेगी। और वो जो इसका मैंने कहा ना, वेस्ट में और बाकी जगहों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, एक चीज जो हम लोगों में मुख्तलिफ है वो ये है कि वहाँ पे इसको इतना बड़ा स्टिग्मा नहीं समझा जाता। तो वहाँ पे बड़ा शो ऑफ करके लोग बता के जाते हैं, आई हैव अ टाइम फॉर माय श्रिंक, आई विल बी गोइंग टू एंड टॉक टू हर एट 5 PM। सो पीपल यूजुअली टेल कि मैंने साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, मैंने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आई एम गोइंग फॉर अ थेरेपी, आई एम गोइंग फॉर अ काउंसलिंग सेशन। पीपल डू दैट, दे हैव अ हाई प्रेवलेंस बट दे हैव अ सॉल्यूशन, दे डोंट टेक इट एज अ स्टिग्मेटाइज्ड इशू। पाकिस्तान में क्या होता है, द मोमेंट यू टेल समवन, इवन अ नॉर्मल फिजिशियन और अ सर्जन और एनीवन रिक्वेस्ट द पेशेंट कि आप फलाने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लें, तो पहला उसका जुमला होता है कि वो पागल है डॉक्टर, वो तो मैं क्या, आप मुझे पागल कह रहे हैं, व्हाट डू यू मीन? तो उस डॉक्टर की अपनी इंसल्ट शुरू हो जाती है। यू डोंट बिलीव इन गोइंग टू द साइकियाट्रिस्ट। अच्छा, इसके बाद साइकियाट्रिस्ट का जो
मैंने उनको बहुत दफा समझाया कि आप अपने बाकी सब पेशों के साथ मिक्स होके बैठे। आप एक अलग से वार्ड बना देंगे सेक्रेटरी का, कोई बंदा वहाँ पे इलाज कराने नहीं भी जा रहा तो लोग उसको देखेंगे कि यार ये अस्पताल खाने गया, ये वाई और उससे पूछेंगे क्या खैरियत है, वहाँ क्यों भेज रहे हैं। That is the difference between a developed and a educated class and us being this less developed country. So हमें सबसे पहली बात स्टिग्मा के ऊपर काम करना है, और स्टिग्मा का मतलब ये है कि डेफिनेशन जब कह रही है हेल्थ की फिजिकल वेल बीइंग एंड मेंटल वेल बीइंग, तो फिजिकल इलनेस होना या मेंटल इलनेस होना इट्स द सेम थिंग. There is something wrong with the body. There's nothing wrong. Brain is a part of the body, just like heart and lungs and others. आप सोचिए उस माशरे में कितनी बड़ी मुनाफत है कि मुझे अगर गांव में हमारे लोग हैं ना, हमारे कई पिंड के लोग होते हैं, उनको अगर शुगर हो जाए ना, वो आधे पिंड को बाजार जाकर बताते हैं यार मुझे शुगर हो गई. They tell everybody with a sense of achievement कि जैसे पता नहीं मेरा सोशो इकोनॉमिक लेवल अप हो गया है, मेरी क्लास अपर लेवल पे चली गई है. हार्ट डिजीज का लोग सुन कर डाल रहे हैं मेरी पर्सनैलिटी होनी है. No one tells about this part of the body which is there, and there is a problem with that. There can be a problem with that. तो ये जो एक समय इंटरेक्शन करना है हमारे जो हेल्थ पार्लियामेंट के लोग हैं, पाकिस्तान हेल्थ पार्लियामेंट के, इनको ये एडवोकेसी लीड करनी चाहिए. इनका काम है एडवोकेसी करना. दे आर डूइंग क्वाइट अ लॉट. हमारा एस्टीमेट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कि पाकिस्तान का जो हेल्थ बजट है दैट इज अबाउट 1% ऑफ द नेशनल बजट. 1% ऑफ द नेशनल बजट इज हेल्थ बजट, एंड आउट ऑफ दैट 1% जो मेंटल हेल्थ का बजट है वो 0.04% है. ये सारा फिजिकल हेल्थ तो हर एक का यूनिवर्सल राइट है, वो सबको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएनओ कन्वेंशन मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, रिगार्डलेस ऑफ द एज, कैन हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम एज वेल. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बजट के आपके बारे में आपको ब्रीफली बता दिया कि बजटिंग कंस्ट्रेंट्स क्या है. ठीक है, ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन द एक्चुअल स्केल ऑफ द प्रॉब्लम एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल. जब तक ये ब्रिज नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता. Shortage of mental health professionals. 1.19 psychiatrists to deal with 100,000 people. ठीक है, and that is the reason why there is quackery and malpractice. ठीक है, फिर आपके पास जो भी हमारे quacks आपको पता है, नाम नहीं लेना चाहता कि कोई controversial ना हो जाए, तो quacks and malpractice जो है वो बहुत ज़्यादा है mental health में. Drugs and alcohol, big issue. ठीक है, I remember from my days at medical college that when we spoke about somebody smoking, it was in news. People would go from far and wide, "Ah, Fulana cigarette peeta hai yaar." These days, you find people as young as 13 and 14 using ice and cannabis, and not a surprise anymore. Okay, so this is what we are dealing with. Policy. We do not have mental health policy in this country. We have a document which says Mental Health Act, but it is not implemented, and it can't be implemented the way it is right now. Why? Because the stakeholders, the policymakers, they probably do not have access to the right information. So we at Mental Health Council, we believe that we can bridge the gap and we can inform the policymakers about those flaws. And finally, we do not have the real-time data, the correct data. We do have the cooked-up data, which we think is not right, and we need to be working and generating our own data. Next. Achha, I am already over my time. I was given 10 minutes. So I'm just going to take 2 more minutes. Mental health advocacy. This is why we are here. Okay? Mental health advocacy refers to the efforts and activities undertaken by individuals, organizations, and communities to raise awareness, promote understanding, and influence policies and practices related to mental health. This is the WHO definition of mental health advocacy, and this is exactly what we plan to do, and I hope we can do it. Next. And this is what mental health advocacy entails. It entails awareness raising, what we hope to do from today. It entails dissemination of information. It entails education. It entails training, mutual help, denouncing bad practices, and counseling. So this is what we hope to achieve at the platform of Mental Health Council. Next. Next. Role of media is very important. The
reason why media is invited today is we want this information to be disseminated, we want mental health to be spoken about, and we want people to talk about it in all platforms. Next. Okay, this is my last slide. So, what are the steps that we plan to do? So this is the WHO statement of advocacy. So we need to determine the magnitude of the problem of mental disorders in Pakistan. How can we do it? By doing real-time research. And inshallah, we are planning to conduct our own research. कुछ इकट्ठा research हमने कर भी लिया है. बाकी हम कोशिश करेंगे कि that is childhood abuse. Either it is sexual abuse, either emotional abuse or physical abuse. This leads a permanent damage in a child, and it leads to then mental health disorder and personality disorder and number of issues. Social isolation, loneliness, discrimination and stigma, social disadvantages, हमारा सबसे बड़ा problem pervasive poverty, debt, and then bereavement, severe or long-term stress, growing insecurity in our country, early age exposure and negative impact of social media. Although I know there is a positive impact too, but they deal with a negative impact at the early age. And the political uncertainty, unemployment and long-term physical health conditions of the child or the parents or anybody in the family, they interfere with their mental health. Next. So now I will come, what is the relation with concept ban gaya hai, if you want to relax, if you want to have fun, then it means that you have to do drugs. Looking cool, if you are doing drugs, you are cool. Coping skills hai, stress manage nahi ho raha, anxiety manage nahi ho rahi, issues manage nahi ho rahe, let's do drug. And a drug means impending and crisis will be unimaginable, so we all need to work about it. और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज बी सेंसिटिव अबाउट दीज इश्यूज. अगर आपसे कोई बच्चे, आपके कॉलीग्स, आपके फ्रेंड्स या कोई भी बात करता है, सो व्हाट इन माय नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. बताएं. अच्छा, अब चैलेंजेस क्या है अभी ड्रग अब्यूज में? लैक ऑफ इंसाइट अमंग पेरेंट्स, वो डिनाई कर देते हैं. अगर मैं उनको कहती हूँ कि मैं एक ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ और उसमें सारी स्क्रीनिंग आ जाएगी, तो उसको भी रिफ्यूज कर देते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द डेंजर ऑफ ड्रग्स एडिक्शन, बच्चों को पता ही नहीं है. Absence of licensed drug rehabilitation center, quackery practices in rehabilitation center, and poor or ill treatment. It's both genetic, it's stress, it's how your mental makeup is life. Quite frankly, then in that case, we live in Afghanistan. Now everything is stress causing. The whole day, you sit on TV, you watch these shows, there's stress. Technically, you go to university, you know you're stressed out, and deal with kids all the time. बहुत important चीज़ आपको जो हमारे सर्वे डेटा दिखाता है, जो हमने बहुत सारी बातें की. 51% of your kids are graduates. 30% of your PhD. We're loading them with poor quality degrees. हम उसके ऊपर थोपी जा रहे हैं किताबें. Then unemployment. फिर वो ढूंढते हैं रास्ता बाहर. 64% of them want to leave the country, and they are trying desperately to leave the country. PhD जाके बेटर लगे बाहर. ठीक है? जो आप उनको डिग्री लोड कर रही हैं, just wasting their time. बजाय 18, 19, 20 में ग्रेजुएट करें, आप उनको ग्रेजुएट करा रहे हैं 30 साल में. कोई बहुत उस्तादों को चाहिए थे बच्चे बैठे हैं, प्लीज. So they're pretty old by the time they come out of university. What are they going to do? Then जब हमसे पूछते हैं, our kids say they have no aspiration, no ambitions. And we're not worried about it. Kids say they have no ambitions. Also very Everything is done by this technology thing. So हमें बहुत इम्पोर्टेंस है इस बात की कि हमें जो नेट जो, और ये मेरा ख्याल है इनकी डोमेन है. हेल्थ डिपार्टमेंट को, जहांजेब साहब को, बाकी सबको जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, उन सबको चाहिए कि आप इसको कोशिश करें कि किसी भी तरीके से इसको इंटीग्रेट करें, और इंटीग्रेट भी इस तरह से करें कि जो हमारा मेडिकल का बंदा है, एंड देन यू हैव दिस द प्रॉब्लम ऑफ एसोसिएशंस, इनको आपस में बिठाएं. फॉर एग्जाम्पल हेल्थ पार्लियामेंट
सिकंदर जमान और बाकी जो इनकी टीम है, ये यहाँ पे इंटर सेक्टोरल के साथ साथ इंटर जो मेडिकल की कम्युनिटी है उनको भी साथ बैठाएं एंड देन फाइंड आउट एन एल्गोरिथम. हमें एल्गोरिथम, दुनिया एआई में पहुंच गई है, हम यहाँ पे अपने एल्गोरिथम नहीं बना सकते कि पेशेंट आएगा बीएचयू में तो उसे कैसे मैनेज करना है. मेंटल हेल्थ का केस आ गया एंड यू आर सेइंग दैट हाफ ऑफ द पर्संस हैव द प्रॉब्लम. इफ 24 करोड़ लोगों में से आधे लोगों को भी मसला है मेंटल हेल्थ का कोई किसी किस्म का, तो कितने करोड़ लोग हैं? 12 करोड़ लोग हैं. अब अगर वन पॉइंट स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? अच्छा जब स्ट्रेस हो गया, I see my bad statement, I see my assets and possession and things are not very easy. So what would I do? Majority of individuals are seeking help, are taking interpersonal communication as their coping mechanism to address this stress, which is pretty good. But imagine कि इस डिस्कशन और इस डिस्कोर्स के दौरान जिसमें मैं अपने दोस्त के पास गया and I talked about my financial crisis and my debts which are mounting, and in response to such hue and cry, what is the likelihood कि my friend will say, okay, borrow from me, okay, fine, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ, भाई को देखो पिछले 3-4 साल I'm in pain. No, he will be responded by very sympathetic responses, not empathetic, because they are not trained in rendering empathy, they are friends. So they will be very sympathetic, oh yaar bahut bura hua, I really feel sorry about you, I'm feeling bad, तुम्हारी मेरी भी हालत बहुत बुरी है लेकिन तुम्हारी तो बहुत ही बुरी है, तो चलो आओ गले मिल के रोते. So that kind of interpersonal interaction is being subscribed to, not bad, but imagine अगर PHC enable करे preventive health care पर when is going to take these things with a little more authenticity, accuracy and competence to talk about, so the problem will be resolved in a better way. Conclusion, very good slide, relieving, it is coming to an end. Impact of economic struggle, almost repeat किया है मैंने, मेरा ख्याल है I can overview, forego these slides, जो हमारी ये प्रेजेंटेशन और इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपसे शेयर की जाएगी. एंड मैं सिर्फ थोड़ी सी रिकमेंडेशंस पे आना चाहूँगा कंक्लूजन में, जो मैं आपको स्लाइड्स पे दिखा चुका हूँ उसी को हमने रिकैप किया. प्लीज आगे जाइए. रिकमेंडेशंस, स्मार्ट पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, पीएचसी उसमें फैसिलिटेट करेगा. वी विल बी कमिंग अप विद द पॉलिसी पेपर्स, white papers, policy framework. We are willing to do it, and we would like it in form of legislation, as we did talk about. कि Pakistan mental health policy non-existent, Pakistan mental health council एक bill दिया गया, assembly में वो घूमता फिरता रहा और उसके बाद I don't know where is it, eating dust. Pakistan Psychiatric Society, yes, functional. Pakistan Psychological Association, PPA, dysfunctional. Tankers वाले हड़ताल कर दें अगर आज, तो आपकी मेरी गाड़ियों में तेल नहीं होगा. लेकिन Pakistan Psychological Association is a dysfunctional body in this country. So we have taken this as our responsibility to help legislators make smart policies, accessible mental health support, not only curative, rather preventive mental health care के ऊपर भी हमने बात की और हम अपनी पैनल डिस्कशन में भी करेंगे. We need to induce mental health awareness, mental health advocacy की डॉक्टर आफ्ताब ने बात की. Big dearth of effort and policies and resources, intellectual resources I'm talking about, which this particular area deserves. Move on. Workplace program at House of Wellness, we are talking about occupational health. आपके इल्म में होगा कि हम अपनी जागती हुई जिंदगियों का सबसे बड़ा हिस्सा, हम अपना 2/3 हिस्सा ओवरऑल लाइफ का 2/3 हिस्सा तो हम जागते हैं, और उस 2/3 हिस्से में से कम से कम 60 से 70% हिस्सा हम वर्क या वर्क प्लेस रिलेटेड एवेन्यूज में सर्व करते हैं. So where should this mental health awareness, advocacy, preventive health care efforts stem from? At home or at work? So we are vigilant that we have to come up with mental health at work frameworks as well, and community connection. This is the community connection, the embodiment of which is here in this very hall. So that's all about it. These are my 250 slides. Last slide is important. Final report is in the process. I would like, I take pride in Pakistan Health
Parliament's effort to come up with this very needed, inevitably needed effort to document what we are going through, because जैसे हमने टीवी चैनल्स की बात की, डॉक्टर साहब ने कहा कि चैनल साइन कर देते हैं आपके प्लास्टर के ऊपर, but there's nothing that you can acknowledge that this is how I am hurt, you that is damaged. One thing. So awareness is created, but where is the resource? So all kind of people are in the field, and the person who needs the help does not know who is really trained, one adequately trained one, and who has just done his bachelor's and sitting somewhere claiming to be a master of mental health, and they're having expertise in that area. That is our problem. Query बहुत ज़्यादा हो रही है, रेगुलेशन नहीं है और किसी किस्म की लाइसेंसिंग भी नहीं है, तो हर एक को खुली छूट है. Universities, every university is running a BS clinical psychology, BS psychology or MS clinical psychology program, turning out lots and lots of experts who work with them. खुद को कितना हद तक एजुकेट करते हैं और क्या करना चाहिए उन सब मसाइल के लिए जो आपने जिक्र किया डॉक्टर साहबा. ये बहुत अहम चीज़ें हैं. अपनी दानिश में कोशिश पिछले कई सालों से मैं कर रही हूँ अपने साथ जो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो हम सब बिलीव करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, और हमने इसके लिए कुछ हद तक सेनेट की मीटिंग्स भी अटेंड की हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स पे जो काम करते हैं सेनेटर्स जो प्रेजेंट करते हैं बिल, उनसे भी बात की है, और एक नया तजुर्बा भी हासिल किया है कि हमारे वो सेनेटर जो हमारी ही पॉलिसीज़ को अब असेंबली में प्रेजेंट करते हैं वो कितने आगाह होते हैं उस चीज़ के बारे में जिसको वो प्रेजेंट करते हैं. तो मेरी भी बहुत सारी चीज़ों में मालूमात में इजाफा हुआ है. कोशिश में लगे हुए हैं. कुछ जगहों से कुछ लोग अभी बहुत कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं. यहाँ पे जो हमारे क्वेरी प्रैक्टिस हो रही है उनको इनह्यूमेन तरीके से चेंज करते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करते हैं. इट्स another huge topic and I will not go in detail. This is very very important slide and please I want everybody to pay attention to that. What is the difference between substance और ड्रग्स मिसयूज एंड एडिक्शन? आप सब लोग इनको पहले कहते होंगे एडिक्ट्स. ऐसा नहीं है, दे आर नॉट एडिक्ट्स. ड्रग्स मिसयूज इज नो मोर कंसिडर्ड अ लाइफस्टाइल चॉइस. It is a mental health disorder due to many etiological factors including genetics and like many other illnesses. There are neurobiological changes in the brain areas. Patients suffering from substance misuse disorder are not addicts, but they are victims. So please don't call them addicts, call them substance misusers, or understand this that they are not attracted to drugs just because they like it. In their brain there are chemical changes, their genes, a number of other factors that this is a disorder and you need to get it treated like any other physical or mental disorder. Next. So this was my favorite quote और ये मुझे बहुत पहले से पसंद था and I would like to quote it over here. It is easier to build a strong children than to fix the broken man. Thank you very much. हमारा एस्टिमेट है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कि पाकिस्तान का जो हेल्थ बजट है दैट इज अबाउट 1% ऑफ द नेशनल बजट. 1% ऑफ द नेशनल बजट इज हेल्थ बजट, एंड आउट ऑफ दैट 1% जो मेंटल हेल्थ का बजट है वो 0.04% है. यही सारा फिजिकल हेल्थ तो हर एक का यूनिवर्सल राइट है, सबको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूएनओ कन्वेंशन मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ स्किन, रिगार्डलेस ऑफ द एज. इसके अगर 10 औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो 10 औरतों में से 1 से 2 औरतों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल क्लास और रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव और कौन है. It's both genetics, stress, it's how your mental makeup is your life. Quite frankly, then in that case, we live in Afghanistan.
Now everything is stress causing. The whole day, you sit on TV, you watch these shows, there's stress. Secondly, you go to university, you know you're stressed out and deal with kids all the time. बहुत important चीज़ आपको बता दूं जो हमारे सर्वे डेटा दिखाता है जो हमने बहुत सारी बातें की. 51% of your kids are graduates. 30% of your PhD. We're loading them with poor quality degrees. हम उसके ऊपर थोपी जा रहे हैं किताबें. They're unemployed. फिर वो ढूंढते हैं रास्ता बाहर. 64% of them want to leave the country, and they are trying desperately to leave the country. PhD जाके बेटर लगे बाहर. ठीक है? जो आप उनको डिग्री लोड कर रही हैं, just wasting their time. बजाय 18, 19, 20 में ग्रेजुएट करें, आप उनको ग्रेजुएट करा रहे हैं 30 साल में. कोई और उस्तादों को चाहिए कि बच्चे बैठे हैं, please. So they're pretty old by the time they come out of university. What are they going to do? Then जब हमसे पूछते हैं our kids say they have no aspiration, no ambitions. And you're not worried about it. Kids say they have no ambitions. बहुत से बड़ी ambition